Hello, hello, hello. Good evening. Welcome to Amjadali RJ's show. And now we'll talk about, such a wonderful game, the game of cricket. The red ball cricket, the best form of the cricket is the test form of cricket. Yes, India versus Sri Lanka, and it is Galle, the den of Sri Lanka, the area where Sri Lanka feel quite confident, of it. They've been doing pretty well, and they've been playing exceptional cricket. Particularly at Galle, considering that they've got world beaters with them when it comes to their spinners. Prabhat Jasuria is the one who is their trump card, and of course they've got Dhananjay De Silva, the skipper as well. But today, none of them have succeeded in getting a wicket of an Indian batter. Yashasvi Jaiswal, I believe, was quite unlucky because there was a mix-up between both gents, Yashasvi Jaiswal and KL Rahul. But unfortunately, I think it was Rahul's fault, in my opinion, that he shouldn't have run for that because जब वो shot खेला है उन्होंने mid on पर, he was the one who was keeping a very close eye on the scenario. और वो अनफॉर्चुनेटली बॉलर का भी कसूर नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि वो नेचुरली बॉल को स्टॉप करने जाते ताकि एक रन ना बन पाए, लेकिन समहाउ आई थिंक शायद मिस कैलकुलेट किया राहुल ने। वो जो फंबल हुआ, थोड़ा स्टंबल किया जायसवाल ने, एंड अनफॉर्चुनेटली कुडंट मेक इट। सो वो अनफॉर्चुनेट एपिसोड रहा, लेकिन उसके बाद आई थिंक फिनोमिनल पार्टनरशिप बिटवीन बोथ द वंडरफुल क्रिकेटर्स राहुल and the other guy, Devdutt Padikkal, playing phenomenal cricket, and India is right on top in this game, 197 for the loss of just one wicket, and both of the gents are closing on their centuries. We've got a wonderful person with me. Hello, Ranja Imran Sahab. Good evening. कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सर? थैंक यू वेरी मच सर। आप भी जिए, खुश रहें। ये लें सर, आपके आने के लिए ये 6 रन आपके आने पर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। अगेन वंस अगेन ग्रेटफुल टू यू सर। और ये आपके लिए सीटी भी, क्योंकि आप हमारे दी बेस्ट हमारे व्यूअर्स में से हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सो आज तो आई थिंक द वे इंडिया हैव बीन प्लेइंग, इट्स मार्वलस। और अभी तक शुभमन गिल बैटिंग के लिए नहीं आए, एंड परफेक्ट आई थिंक स्टार्ट, आइडियल स्टार्ट फॉर टीम इंडिया, और गॉल में वो भी। और कल जैसे मैंने कहा था कि आई थिंक गिल अगर टॉस जीते हैं तो उनको पहले बैटिंग के लिए जाना चाहिए। सुन लिया होगा शायद, हो सकता है लेजेंड्स की बातें सुनते होंगे वो। तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस। सो आसिता फर्नांडो 8 ओवर्स में 19 रन, कोई विकेट नहीं। लहिरू कुमार 8 ओवर्स में 36 रन, कोई विकेट नहीं। नुवान था केशारा, नुवान था 13 ओवर्स में 63 रन, कोई विकेट नहीं। प्रभात जयसूर्या, देर दी बेस्ट स्पिनर, 18 ओवर्स में 54 रन, कोई विकेट नहीं। धनंजय डिसिल्वा द स्किपर हिमसेल्फ 2 ओवर्स में 7 रन, कोई विकेट नहीं। और सोनल डिनूशा जो कि स्किपर थे इन द वार्म अप गेम, 4 ओवर्स में 17 रन, कोई विकेट नहीं। 84 रन पे देवदत्त पैडिकल हैं, और राहुल ने 77 रन बनाए हैं। दोनों एक एक छक्का लगाया, 9 चौके लगाए। राहुल ने 7 चौके लगाए, पैडिकल ने। सो ओवरऑल आई थिंक इंडिया आर इन अ कमांडिंग पोजिशन इन दिस गेम, एंड they've done I think a great job, I must say. नाइस टू हियर कि आप ठीक हैं रांझा साहब। एफआई हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 10 PM टुनाइट। जी बिल्कुल, 10 बजे रात को मैच है, एंड बेस्ट ऑफ लक, फिंगर्स क्रॉस। पाकिस्तान की टीम, थोड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, नहीं, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड कैसे होता है, हम एक पूल में नहीं है। मलेशिया वर्सेस जर्मनी 5:30। थैंक यू रांझा साहब। पाकिस्तान की गेम के ऊपर हम नजरें यूँ जमाए हुए बैठे हैं। वैसे भी रात के 10 बजे मैच है, सो विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग सम गुड परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान को एक तो बेल्जियम टकरा, इंग्लैंड टकरा, दोनों बड़ी टीमें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी गॉट साउथ अफ्रीका, सो प्रोटीज के खिलाफ perhaps we can do a little better. Yeah, India versus Wales, now that's right. And there is no need to be sorry, or there is no need for any thanks. Yeah, हम सबकी अपनी स्ट्रीम है at 4, right? So लेट्स सी, उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। बट विल टॉक अबाउट द गेम, द टेस्ट फॉर्मेट, द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट। इसका हुस्न ही अपना एक निराला है व्हेन इट कम्स टू लाल बॉल से खेलना, रेड बॉल क्रिकेट, द बेस्ट फॉर्मेट वेयर यू सी द टेम्परामेंट बीइंग टेस्टेड, द क्लास बीइंग टेस्टेड, एंड आई थिंक बहुत ज़बरदस्त। जो अर्ली कब आए 47 पर एक विकेट गिरी इंडिया की, और वो भी रन आउट बदकिस्मती से, वरना 5 चौके लगाए थे जायसवाल ने। आज लग रहा था कि जायसवाल रिदम में है, क्योंकि मैंने जब पहले हम बात कर रहे थे कि जब वार्म अप गेम आया तो उसमें जायसवाल अच्छा खेले थे। सो दैट इट वाज आई थिंक द राइट प्लेटफॉर्म
for him to deliver. Pakistan, India, England, Wales, Pool D. Nahi, Pakistan is with England and South Africa. So I think there's a little bit of correction. I think that needs to be done in this case. So दूसरी तरफ बांग्लादेश have surprised many. ऑस्ट्रेलिया 228 रन का डेफिसिट हुआ एंड such an unfortunate thing on their part क्योंकि 161 पर चार खिलाड़ी आउट हैं they still have 67 more runs पहली इनिंग की लीड उतारने के लिए and they've got 6 wickets in hand. स्टीवन स्मिथ आज सॉफ्ट डिसमिसल हुआ. लेकिन आई थिंक हसन एक दफा फिर छा गया. प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड तो श्योरली वो लेकर जाएगा ही जाएगा. ग्रेट परफॉर्मेंस आई थिंक बाय हसन. दोनों ओपनर्स को उसने आउट कर दिया. अनलकी रहे कि मानस लबुशेन को चांस मिल गया शुरू में ही. अदरवाइज लबुशेन को जल्दी आउट करते तो हो सकता है कि शायद ज़्यादा बेहतर होता. साउथ वार्म अप पाकिस्तान लॉस्ट पूल डी इज करेक्ट. ओके ओके. Okay, I did see it on the official website of FIH, but I'll have to do the corrections. I think because I thought Pakistan and India they do not exist in the same group. They are in different groups. So let me just FIH Hockey World Cup 2026 schedule, and here you go. And yes, we'll be having some matches. So upcoming games. So India versus Wales, they are in Pool D, and this is scheduled today at 4 p.m. And then Germany versus Malaysia at 17:30. Netherlands versus Chile at 19 hours, and that's today. And they are in Pool A. Argentina versus. So my bad. I must say my bad. Pool D में पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है ये तो मुझे पता है, लेकिन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आई थॉट एक पूल में थे, बट लेकिन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भी इसी पूल में है. सो आई थिंक थोड़ा कुछ गड़बड़ी है क्योंकि इंडिया जो है वो पूल डी में है. इंडिया भी पता नहीं क्या. चलो मैं इसको बाद में आई रिव्यू इट. नहीं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हॉकी वर्ल्ड कप. चलो लबुशेन फारिग हो गया है. बिल्कुल फारिग हो गया. आई थिंक लबुशेन द वे ही हैज बीन परफॉर्मिंग इट्स अ सॉरी थिंग बिकॉज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बहुत गड़बड़ें कर रहा है क्योंकि मेरे ख्याल पे सबसे जो इनका ओवर हाइप खिलाड़ी वो कैमरॉन ग्रीन है. बिकॉज ग्रीन इज ऑफ नो यूज. आप उसको बार बार खिलाई जा रहे हैं. मेरा तो ख्याल है अगले टेस्ट में इनको बाउंसी ट्रैक बनाना चाहिए, full grass all over it, and they should pull in Scott Boland in that game in place of Cameron Green because Boland इससे अच्छा बैटिंग कर लेगा. बॉलिंग तो ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा अच्छी करता है. तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल हैव टू चेंज द गियर्स. दे विल हैव टू draw the level. इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का बचना 99% is I think it's done and dusted game. से कोई सेंचुरी नहीं मानस की. आई थिंक मानस के पीछे भी कोई पर्ची है. पता नहीं यहाँ से कोई कॉल गई है. लेकिन बहरहाल आई थिंक वुड से कि बहुत ही लकी हैं मेरे ख्याल में तो लबुशेन के. उनको टीम में बार बार मौका मिलता है एंड लेट्स सी क्या होता है. एंड बाबर आजम के बारे में आया कि वो इंजर हो गए हैं. डोंट नो कि बाबर आजम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे. प्रैक्टिस मैच से तो वो आउट हो गए थे एंड आई डोंट नो कि क्या बनेगा. बट बहुत बहुत अच्छा रहेगा. हॉकी के मैच को भी कवर करने की कोशिश करेंगे एंड विल सी व्हाट हैपेंस. ग्रीन के नाम सुना है, परफॉर्मेंस नहीं देखी इसकी कभी. हाँ, कैमरॉन ग्रीन अभी आईपीएल में भी रिसेंटली बहुत महंगे दामों में बिके थे. पहले इनसे बॉलिंग नहीं कराएगी कि बैटिंग में इनका बड़ा ऑरा है जी. बैटिंग में फारिग हुआ तो इवेंचुअली फिर बॉलिंग भी कराएगी कि आराम को इतने पैसे लिया तूने, तेरे बाप की थोड़ी आईपीएल, चल पैसा वसूल करा. He had to bowl as well. So I think he's overhyped. Overrated खिलाड़ी है. Good for nothing. अगर आप 10-15 इनिंग्स में एक में डिलीवर करेंगे, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज वर्थ इट. और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रोफेशनल साइड, द वेरी बेस्ट साइड इन द बिजनेस. तो उसमें आई थिंक बहुत ही ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयरलैंड एंड साउथ अफ्रीका आर नाउ इन पूल सी. एंड पाकिस्तान का पूल बहुत ही सख्त पड़ा है. when you have got the likes of India and England in the same group, बहुत ही बुरा. अर्जेंटीना, जापान, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड. आई थिंक ये थोड़ा आसान ग्रुप है. ये ग्रुप हमको देते ठाकुर. हमें तो वैसे बहुत ही मुश्किल है पूल बी में.
Belgium, France, Germany, and Malaysia. And Pakistan is among the toughest of them all because we've got the arch rivals India, and then of course England भी इसी में है. तो बैंड बजने वाला है because we are not playing that kind of hockey. But the top two for each pool, right? Uh, Belgium and France, Belgium and Germany Pool B. Then Netherlands and New Zealand Pool A. C. Uh, Australia and Spain, and Pool D. Pakistan, India, England, and Wales. Very tough. I wish India, Pakistan will be through, but I think it will be India and England. They'll be through. They'll be the top two from this pool. So don't know. Niaz hence PCB fake injury of Abdullah Fazal. आई डोंट नो, कांट से मच अबाउट. बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है. आई थिंक इमामुल हक के ऊपर नो फुल स्टॉप लग जाता है. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती है आई थिंक गेम के साथ. व्हेन यू हैव अ लुक एट इट, आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ा जुल्म है. यू वुड हैव बीन द आइडियल चॉइस. इमामुल हक तो खैर लकी है, क्या बोलें. अपनी क्रिकेट में सब चलता है. अभी तो मेरे पास एक न्यूज़ आई कि वसीम अकरम उनको चेयरमैन पीसीबी बना रहे हैं इन प्लेस ऑफ हैप्पी साहब. आई थिंक इट हैपन्स. इफ इट हैपन्स इट विल बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि वसीम भाई ज़ाहिर है जाते जाते दुनिया से कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना चाहेंगे. तो पाकिस्तान की क्रिकेट को एक दफ़ा फिर अपने पाँव पर खड़ा करना, इससे अच्छी बात और क्या होगी हमारे लिए. सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अभी तक तो यही है कि फिंगर्स क्रॉस्ड है. अभी तो खैर जो तो हाल किया है आई थिंक बांग्लादेश ने. दे हैव रियली डन वंडर्स. 426 रन बना दिए. इतना बड़ा ट्रियो पेस का, जब स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस बॉल कर रहे हो, कैमरॉन ग्रीन भी हो, लॉयन भी हो, किसी की रेपुटेशन को खाते में नहीं लाया. आई थिंक जो तंजीद ने कल तमीम ने काम किया, सेंचुरी स्कोर किया. आज मेहदी मिराज ने कमाल कर दिया, विकेट भी ले गया, वो भी बड़ी विकेट ले गया. और उसके बाद उसने हाफ सेंचुरी स्कोर की और फंसा दिया उसने. आई थिंक बहुत ज़बरदस्त रहा ओवरऑल उसका कंट्रीब्यूशन इस टेस्ट में. नकवी साहब खुद जाएं तो जाएंगे, निकाल को नहीं. मैंने बोला कि उनसे रिक्वेस्ट किया, पाँव पड़े होके. साहब से याद आया, चेयरमैन पीसीबी एंड इंडियन मिनिस्टर वसीम रियाज बीन नॉमिनेटेड फॉर द निशान इम्तियाज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. क्या बोले हैं? लग देखो कौन नॉमिनेट कर रहा है, कौन नॉमिनेट कर रहा है. और चलता है, दुनिया है, होता है. कोई बात नहीं, बड़े छोटे छोटे मुल्कों में भी छोटी छोटी बातें होती रहती है. कांट कांट हेल्प ऑन दिस, बट सहन शक्ति बढ़ा के रखो. कोई बात नहीं, दुनिया है. इस दुनिया में बहुत सारे अनहोनियाँ होती रहती हैं. सो वी आर pretty much used to it. I think सीटी हो जाए उनके लिए, जो कि मिस्टर 10% है. 6 for him as well, and what a nomination, 6 for the nomination as well, and the nominee as well. So I think बहुत सारे मेरे को तो लगता है हमारा हिसाब भी थोड़ा कम होना चाहिए, नहीं? हमारा थोड़ा हिसाब कम होना चाहिए. जब भी दुनिया से कल्टी होंगे, वी शुड बी गिवन सम लेवरेज फॉर सो मेनी. हमने दुनिया में इतना अजाब देख लिया, तो आगे मेरे ख्याल है कि थोड़ा कंसेशन तो बनता है हम लोगों को. इतना तो राइट बनता है हमारा, मेरे ख्याल. चलो, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा बोल नहीं सकते. बाहर गाड़ी आ जाती है, बहुत ही धांसू गाड़ी होती है, और उसमें आंखों पे पट्टी और कहाँ कहाँ पट्टियाँ करानी पड़ती हैं बाद में, वो मेरे को मालूम नहीं है इतना. चलो ठीक है, जाने दो, काम की बात करनी चाहिए. इससे पहले कि आज तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए, तो इससे बेहतर यही है कि औकात में रहना चाहिए. बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ, इसीलिए अभी तक बचा हुआ हूँ मैं. तो बहरहाल जी, आई थिंक इस टेस्ट मैच में अभी तक यू टॉक अबाउट द गोल्ड टेस्ट, आई थिंक यही एक टेस्ट था जिसमें श्रीलंका कुछ बेहतर कर सकता था. लेकिन आई थिंक उनके हाथ से गेम तो निकल गया है, क्योंकि ये गेम तो गए भाई. टी के ऊपर इंडिया राइट ऑन टॉप, एंड अनदर सेशन लेफ्ट. इंडिया डेफिनेटली विल बी कमिंग आउट बैंग बैंग बैंग, एंड दे विल बी स्कोरिंग लॉट ऑफ रन्स. अभी 3.72 है इनका करंट रन रेट, एंड ऑब्वियसली एज द टाइम प्रोग्रेसेस ये बहुत बेहतर होगा. डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया दस फार इन द कॉन्टेस्ट. 150 रन की बड़ी पार्टनरशिप दूसरी विकेट के लिए बन चुकी है. एंड आई थिंक कुल मिला के यही है कि Padikkal is eyeing his century, a glorious century.
and a chanceless century. Rahul also is doing pretty well और अच्छा है and of course जैसे ही टी ब्रेक अभी ख़त्म होने वाली है विल बी इनटू द गेम स्ट्रेट अवे और उसमें इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से शुरुआत होती है आखिरी सेशन की इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए जस्ट अ मोमेंट तो अभी टी की ब्रेक जो है वो ख़त्म हो रही है स्मिथ को बोला किसी ने एक्टिंग कर रहा था साइड स्क्रीन के सामने बोला एक ने स्टॉप बीइंग लाइक अ प्रिंस गलत कर गया वैसे स्टीवन स्मिथ बड़ा खिलाड़ी है लेकिन आई थिंक बांग्लादेश को दाद देनी चाहिए उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट आई थिंक दे वर डिसिप्लिन्ड इन द गेम and they played a lot better than Australia. Australia would be stunned for sure because they would be in great disbelief as what has happened in this game because they wouldn't have even dreamt of it that Bangladesh will come and bang them like this. I think Bangladesh ka off late their performances have been pretty good. They've been playing decent cricket. ठीक है उन्होंने जिम्बाब्वे की टूर पे बड़ा पुअर खेला लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से दमदार उन्होंने आई थिंक स्टार्ट किया है डार्विन में ये तो बहुत ही कमाल है नाउ वी कैन सी बोथ द जेंट्स आर कमिंग आउट एंड राहुल इज देयर एंड सो इज द केस विद देवदूत पैडिकल दोनों आ गए राहुल 77 पे हैं 84 पे हैं पैडिकल और अच्छा गेम होना चाहिए इसमें ट्रेविस हैड ड्रॉप कैचेस इन ओवर ऑफ पैट कमिंस Taskin and Travis dropped Mehdi. Oy, hoy. I couldn't get a chance to watch the game because I went with my friends. We had a breakfast session in the morning. So जब मैं आया तो खैर हम नज़र तो रख रहे थे गेम के ऊपर एंड वी वर ऑल ऑफ अस वेरी हैप्पी कि यार ऑस्ट्रेलिया का बैंड बज रहा है नो वी वर हैप्पी तो राहुल somewhat is not looking that comfortable so we can see yes, Lahiru Kumara is getting ready. 5 drop catches by Australia in total. So बैंड तो बजना ही था वैसे तो उन्होंने पहली इनिंग्स में तंजीद तमीम का कैच छोड़ा उसने सेंचुरी ठोक दी तो ब्लंडर्स तो इन्होंने भी किए हैं खैर बांग्लादेश ने भी कैचेस छोड़े हैं ऐसा नहीं है दोनों ने नहीं छोड़े थोड़ा फॉल्टर तो करते हैं लोग आई थिंक इट हैज़ बिकम क्वाइट नॉर्म दीज डेज नासिर चने वाले के यहाँ गया था क्या आप मैंने रील देखी थी आप जी नासिर चने वाले के गया था बहुत अच्छा इंसान है बहुत ही अच्छा इंसान है वो जो उसमें खुफिया मसाला मिलाता है उन चनों के अंदर वो उसकी अम्मी जी बनाती हैं सुबह को 4-5 बजे तो वो उसमें मिक्सअप करके लेके आता है तो आई थिंक बहुत ही टेस्टी होता है साथ में बोतल फ्री देता है वो आपको सॉफ्ट ड्रिंक भी साथ मिलता है KL Rahul is in somewhat discomfort, as far as I can see him. He is there having a discussion with the umpire, or he's not that comfortable. I can also see Ajit Agarkar standing or sitting over there. So he's in discomfort. He's limping. Maybe I think he will not be able to bat. Seriously, it looks and yes, a pat on the back given by Devdutt Padikkal. So there is something, maybe some muscle pull issue. Oh, maybe he has pulled up his muscle. Oh, God bless. He came out all the way, and all of a sudden, he's in some sort of pain, and he's just gone. So Shubman Gill जो हैं वो आ रहे हैं फिजियो आए हैं इन द मिडल थोड़ा सा उनको ट्रीटमेंट दिया गया लेकिन काफ़ी तकलीफ में दिख रहे हैं यहाँ पर KL राहुल और उन्हें अब जो है वापस ले जाया जा रहा है क्रैम्प्स पड़ गए उनको एंड he's back to the dressing room. So here comes the skipper Shubman Gill. So I think should be a good game. The skipper is right there in the middle. मैं जा नहीं सका इतना सारा घूमने की जगह थी इस्लामाबाद में मज़ा आ गया रावलपिंडी ज़्यादा घूमा ही नहीं रावलपिंडी में कुछ अच्छी चीज़ें हैं मजीद साहब की निहारी बहुत मशहूर है मजीद साहब के चने भी अच्छे हैं और उसके अलावा नासिर चने वाले बहुत मशहूर हैं और भी साईं जी इनके चने बहुत अच्छे हैं कमेटी चौक पर मैं जाता रहता हूँ वहाँ अक्सर खाने के लिए अभी नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो कोशिश करूँगा कल मैंने वैसे जाना है वहाँ कि वहाँ छोटा सा एक कर लूँ वहाँ जाकर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का इसमें कोई बुराई भी नहीं ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं साईं जी अपना है
कोई चीज़ भी फ्राई नहीं। कैन यू प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। राजा बाज़ार का नाम सुना था बहुत। राजा बाज़ार में बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं और कम दाम में मिलती हैं। बहुत बड़ी वैरायटी मिलती है, चाहे आपने खाने पीने की चीज़ लेनी हो, ड्राई फ्रूट्स लेने हो, आपने कोई पहनने ओढ़ने की चीज़ लेनी हो, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सो नाउ देन द फर्स्ट रन आफ्टर द टी ब्रेक and Padikkal is the better. And 85 for Padikkal now, 198 for one Team India. And Rahul is still in somewhat pain, and उनको सहारा दिया थोड़ा फिजियो ने, but he's limping. So he's looking back towards the pitch. Now he is slowly but surely heading back. So कंस्ट्रक्शन जो हुई है वहाँ पर वो बेसिकली थोड़ा उसको ब्यूटिफाई किया गया है, और एक्सेसिबल नहीं रहा अब वो, मतलब पेडेस्ट्रियंस के अलावा वहाँ पर आप गाड़ी बाइक नहीं लेके जा पाएंगे। हाँ, बदतमीजी हो तो आप बाइक ले जा सकते हैं। So Lahiru Kumara is now operating with a slip in place, and there is a gully as well. And still, we can see Rahul being helped towards the dressing room, and the physio was there all the time with him. So best of luck to Rahul, because he was getting closer to the wonderful century. मरी जाते हैं मेट्रो या कोई बस, मुझे बाद में पता चला, मैंने प्राइवेट बुक करवा मरी जाती है, लेकिन उसका थोड़ा सा ये कि आपको फैज़ाबाद जाना पड़ता है। ज़बरदस्त लग रहा था, पुराना अच्छा नहीं था, अभी उतना राजा आप अच्छा खूबसूरत हो गया राजा बाज़ार। नाउ इट्स रीडिफाइंड, अच्छा खूबसूरत बना दिया। काफ़ी उस पे काम किया हम लोगों ने, और पेडेस्ट्रियंस के लिए बहुत फैसिलिटेशंस वहाँ पर आई हैं। बहुत फैसिलिटेट किया गया उनको। Shubman Gill is there as a captain. 15 matches, 1,000 runs, 88 is his average, 269 is the best, 34 otherwise, 60 matches, 1,900 runs, and 128 is the best. So, ever since he has become the captain of Team India, he's been doing pretty well of late. So, a slip in place, Tomara bowling to Gill, and Gill guides it towards third, and it gets off the mark. Uh, he wants the second, and very, very good running between the wicket. Fresh legs, so completes the couple of runs and gets off the mark. Shubman Gill, and double hundred for India. 200 for the loss of one wicket. We are in over number 54. फैजाबाद में गया था, वहाँ फैसल मूवर्स और स्काईवेज का अड्डा था। फैजाबाद से मेट्रो घूमना शुरू किया था मैंने। ओके गुड, हाँ वहीं पर है। एक स्टॉप है मेट्रो का वहाँ पर, जहाँ से वो रावलपिंडी जाती है, फिर सेक्रेटेरिएट तक जाती है। 23 स्टॉप्स हैं, आई थिंक 23 किलोमीटर है, तो ये हर स्टॉप पर 1 किलोमीटर तकरीबन होता है। सो वंस अगेन कुमारा इज नाउ बॉलिंग टू गिल, एंड कम्स फॉरवर्ड, स्ट्राइक फॉरवर्ड, pushes it towards mid off, and very, very nicely played by Shubman Gill. The fielder was placed over there, so it's a dot ball, and 200 for one India, looking in a very, very decent position. Jamanabad, Shamsabad, खत्म नबूवत, सब स्टेशन याद है मुझे। आई डोंट नो ये कौन सा स्टॉप है खत्म नबूवत, मुझे इसका नहीं पता। मे बी पुराना नाम कोई और होगा, मे बी, बट आई एम नॉट श्योर। सो कुमार वंस अगेन steaming in. Oh, well bowled, very well bowled. It jagged back a wee bit, and Gill was equal to the talks, equal to the task, and gets on top of the bounce and pushes it toward cover, and it's a dot ball. So very good bowling by Lahiru Kumara. So this is the end of over number 54, 200 for one India. Padikkal on 85 of 1, 2, 3 balls, and Shubman Gill 5 balls, 2 runs, 9 overs, 39 runs without a wicket is Lahiru Kumara. So अभी तक किसी भी श्रीलंकन बॉलर ने विकेट नहीं लिया है इन दिस पर्टिकुलर इनिंग्स ऑफ इंडिया। एक खिलाड़ी आउट हुए हैं, रन आउट हुए हैं, जायसवाल, एंड अनफॉर्चुनेटली रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं केएल राहुल, और पहला बॉल भी अभी नहीं हुआ था। ही वॉकड ऑल द वे टू द स्ट्रिप, बट अनफॉर्चुनेटली he had some sort of cramps. That's the reason why he went back to the dugout. पिम्स भी गए थे। अच्छा, पिम्स वहाँ आपने सिर्फ बाहर से देखा था या अंदर जाकर देखा था? And here comes Kushara. Ishara, the spinner, another spinner, and I think it's going to be a good contest. Offie, Kishara, very well bowled, beautiful, gentle, loopy delivery.
and it spun sharply. So good bit of bowling. Lucky Padikkal, no outside edge, a slip and a silly point for him. Swept nicely towards long leg for a single. Padikkal moves to 86. He was bowling round the wicket to the left-handed batter देवदूत पेडिकल फिल्म्स भी गए थे आप तो आप आई होप आपने एंजॉय किया था ओवरऑल आपका जर्नी जब दोबारा आएंगे तो मुझे बताइएगा मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ फैजाबाद से कोई करीब 3-4 किलोमीटर होगा या शायद 5 होगा मैक्सिमम एट मोस्ट so Gill taking the guard from the umpire. Keshara is ready. 13.2 over 64 runs. It's been very expensive today. No wickets for any Sri Lankan bowlers as yet. India have been very tight and they are not throwing their wickets away. Very cautious are the Indian batters. 201 for one. A slip in place for and a forward short leg. A dot ball. Very watchfully played towards forward short leg and it's a dot ball. आई थिंक केशारा को बहुत मार पड़ेगी बिकॉज कोई अगर इससे स्टेप आउट करके मारेगा इसकी बॉल ब्रेक नहीं होने देगा तो ये सीधा ऊपर से आएगा अ फुल टॉस बैट बॉल पुट अवे नाइसली बाय गिल टुवर्ड्स मिड विकेट एंड फाइंड्स द फील्ड ओवर देयर सारा विकेट था सिर्फ मिड विकेट पे एक फील्ड था एंड ही चोज दैट फील्ड अंदर गया था मेरे दोस्त को कोई अंदर डॉक्टर उसके पास गए थे मिलने के लिए अच्छा चलो ठीक है बारो बारी ठीक है शोएब मलिक का बैट पड़ा है पीछे मेरे पीछे नहीं ये बाबर आजम का बैट है another loopy delivery and a flighted ball driven handsomely towards deep mid off for a single by Padikkal. He is now on 86. Gill is on 3. प्रभात सिर्फ बाबर को आउट करने आता है नहीं यार प्रभात जसूरिया is I think phenomenal at the goal surface goal पे अच्छा बॉल करता है why retired hurt hello अरहम अस्सलाम वालेकुम कैसे हो क्रैम्प्स आ गया अनफॉर्चुनेटली वो आ गए थे लेकिन स्ट्रिप पे आने के बाद he felt a little bit of pain and it aggravated all of a sudden so physio ran all the way and consoled him but he was not in a position to carry on the journey so he went back to the dressing room I hope वो रिकवरी करते हैं सीएसए मलिक भी खेलता था पहले हाँ वो और था ये एग्जैक्टली बाबर आजम का बैट है जिसको मैंने साइंड बैट लिया है बाबर आजम BA56 इसका नाम है ब्रांड का So Shubman Gill is there. He's on 4. Padikkal is on 87. 204 for 1. 55 overs have been bowled out. हेलो रेबल मियाँ कैसे है फ्लैट पिच बॉल की जो विकेट होती है ये हमेशा सूट करती है स्पिनर्स को और प्रभात जयसूर्या की बड़ी रेपुटेशन है आज जो इन्होंने किशारा को भी खिलाया है स्पिनर को धनंजय डिसिल्वा खुद अच्छे ऑफ ब्रेक बॉलर हैं विराट की सेंचुरी होती अगर वो टेस्ट से रिटायरमेंट ना लेते हाँ हो सकती थी पर अब उनको जरूरत भी नहीं है ये कितने का मिलेगा ये कितने का मिला आपको नहीं तो सुवीनियर है ये हमें इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने गिफ्ट किया था हमें हमें फोकट पे मिला था हम झूठ नहीं बोलते आई शपथ so Padikkal is on 87 a single taken by Gill of Lahiru Kumara 205 for 1 India in a dominant position right now India and they're doing pretty well Ranjit sir, don't respect Prabhat Jisya is the best player on golf. He has 100 plus wickets on QLS right now because the pitch is not assisting too much. देखो ऐसा नहीं होता अरम yes he has got the reputation लेकिन पेसर्स के लिए पहला जो दिन होता है उसमें normally you see the pacers doing the job. I think इनके पेसर्स जो है मिसडायरेक्ट कर रहे हैं oh what a lovely shot very nicely glanced towards fine leg for a boundary and now Padikkal is into the 90s 91 for him of 127 balls 209 India for the loss of 1 wicket it's not about disrespect actually ये कि as the time progresses तब spinners को अपना assistance मिलना शुरू होगा but obviously this will be happening from the day 3 not earlier than that unless we have got some untoward incident taking place अगर पिच के साथ छेड़छाड़ कर दे आकर ग्राउंड स्टाफ तो मैं कुछ कह नहीं सकता अदरवाइज आई थिंक ये गेम अब बहुत मुश्किल हो गया श्रीलंका के लिए और गौली वाहिद उनका एक ऐसा डेन था जहां पर ये बहुत स्ट्रांग थे बट अनफॉर्चुनेटली पेसर्स ने उस तरह से जस्टिफाई व्हाट अ लवली शॉट oh beautiful pull shot beautifully connected by Padikkal he marches to 95 oi 95 two boundaries
Oi, 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 oi. Back to back boundaries. That was a bad ball. It was there to be put away. And he doesn't miss. Padikkal doesn't miss. मैंने उस दिन भी बोला था यार पैटिकल बहुत अच्छा खिलाड़ी है एंड आई थिंक ही डिजर्व्ड अ प्लेस स्पॉट इन इंडिया टीम आई थिंक ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ कि साई सुदर्शन जो है वो अनफॉर्चुनेटली फिट नहीं रहे के राहुल को क्या हो गया है उनको क्रैम्प्स आ गए हैं वो आए थे जब टी ब्रेक खत्म हुई तो वो आए थे स्ट्रिप पर पिच पर आए थे बट ऑल ऑफ अ सडन ही फेल्ट समवट पेन and then the physio rushed towards the pitch but when it aggravated he went back. Oh, glorious cover drive, beautiful shot, beautifully played, and the sweeper cover marches towards the ball, but 2 runs in the process. Now, just the one boundary, one stroke away from a fabulous 100 is Devdutt Padikkal. He's on 97. So, will he make it, 2 balls left for this over of Lairu Kumara during this over, or will this take a little bit of more time? So I think the way he's playing, oozing into confidence, and he should be, he should be looking to for the bad balls. And Nehru Kumara ने इस ओवर में 2 bad ball किए, and they were put away nicely. The hit me balls, 2 boundaries in the very same over, and a couple as well. So 10 runs तो पेडिकल ने बनाया, 1 रन गिल ने बनाया. सो 4 गेंदों में अब तक 11 रन बन चुके हैं एंड स्टिल 2 balls लेफ्ट टू बी बोल्ड एंड लंबे लंबे सांस ले रहे हैं, डीप ब्रेथ ले रहा है लहिरू कुमारा वंस अगेन चार्जिंग इन अ स्लिप एंड ऑलमोस्ट अ फिफ्थ स्लिप इन प्लेस एंड दिस टाइम सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला है towards point and he seals a single. Devdutt Padikkal moves to 98, 216 for 1. India looking in a very, very good position. Umpire asking Devdutt Padikkal, will you get on this side? Because the bowler is operating from over the wicket. So, yes, Shubman Gill is eyeing the leg side. So, Fraz Khan's number in first class is phenomenal. या आप ठीक कह रहे हैं बट आई थिंक उनका जो प्रॉब्लम है सरफराज का जितना मैंने उनको देखा है वो भी लेग साइड पे ज़्यादा खेलने की कोशिश करता है तो दूसरा थोड़ा शेकी होते हैं तो ध्रुव जुरेल को I think चांस देने की बात हो रही थी. Let me go through the Indian playing 11 एज एक्सपेक्टेड. बिल्कुल वही साइड आई है. सिर्फ एक खिलाड़ी जो मैंने कहा था मेरे ख्याल में यहाँ पर शायद बरार को चांस मिलना चाहिए था, गुरनूर बरार को, लेकिन वो खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा रहे. सो कृष्णा के ऊपर बहुत प्रेशर होगा. मानव सुथार जैसे कल बात हो रही थी, ध्रुव जुरेल, तो ये दोनों टीम में खेल रहे हैं. नाइस टू सी कुलदीप यादव. आई वांटेड हिम टू प्ले एंड आई थिंक अभी तक तो सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं. लेट्स सी क्या होता है. बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि इंडिया इस मैच में शायद श्रीलंका को हिलने नहीं देगा क्योंकि इंडिया विल बी आइंग समवेयर 400+ रन्स और ये मेरे को तो लगता है बन जाएंगे आराम से क्योंकि अभी तक एक खिलाड़ी आउट हुआ है. राहुल किसी भी टाइम क्रैम्प से रिकवर करके वापस आएंगे बैट के लिए. और अगर गिल जिस तरह से उनकी फॉर्म चल रही है, अगर गिल स्पेंड्स सम टाइम इन द मिडिल और अगर आज गिल खड़े रहते हैं तो एक सेंचुरी और आपको दिखेगी इंडिया की तरफ से. Here comes Kishara. Oh, what a lovely ball. And there is an appeal. There is an appeal. The umpire turns it down. And they've got their hands on the head. Devdutt Padikkal is the batter. And Kishara is begging the captain, please do something, sir. Go for the review. Dhananjay Silva having a look at it. There is, I think the DRS timer is done. So the review hasn't been taken. His heart must have been in his mouth. Devdutt Padikkal got a beauty. That was a lovely ball. Wow! What a lovely ball. Very, very well bowled. He beat him in the flight, and that was such a lovely ball. And I think Padikkal is very, very lucky. Very lucky. Nonetheless, a very good ball by Kushara. So it goes to show that the ball is now turning a bit. Nicely pulled towards mid wicket by Padikkal. He wanted a second run, but Gill declines it. I think very right call. 99 for Padikkal. So now he's getting closer to the 100. मैं वैसे एक बात पूछूं, बुरा ना मनाना, आप मेरे आने पे इतना खुश नहीं थे बाकियों की नस्बत. हेलो, 6 रन आपके लिए रेबल. सॉरी यार, मैं भूल गया, मुझे माफ कर दो. आपका मैं नाम लेता होता हूँ भाई. श्रीलंका ऑलरेडी आउट फ्रॉम दिस. इंडिया विल स्कोर 500+. वेल मैं तो 400+ कह रहा था. अगर 500+ हो तो वैसे ही बैंड बच जाएगा.
इनिंग डिफीट ना हो जाए बेचारों को। तो यार मेरे लिए तो कोई भी आता है मुझे खुशी होती है। रेबल कैसी बात करो, तुम्हारा और फारिस का, अरम का तो मैं नाम लेता हूँ। तो हमारे तीन बेस्ट पाकिस्तानियों में से आते हो यार। तो 218 और तीन गेंदें बाकी है इस ओवर की, 99। पेडिकल और फैंस जो हैं बड़े इस वक्त चार्ज अप हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और बकअप कर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ ब्रीज, वी कैन सी द ब्रीज बिकॉज इट्स कोस्ट साइड पे है। सो नेचुरली देयर विल बी सम असिस्टेंस फॉर द बॉलर्स, पर्टिकुलरली द स्पिनर्स, एज द गेम प्रोग्रेसेस। तो अभी ही बॉल ने थोड़ा घूमना शुरू कर दिया है, एंड बाउंस एज वेल। Another good ball, very, very watchfully played. Nicely, glided towards mid-wicket region, but there was a fielder out there, so no run. This kind of pitch gives 60% advantage to first inning batting. या दैट्स ट्रू। ये अगर आपको याद हो, कल मैं बात कर रहा था कि अगर गिल टॉस जीतते हैं, उनको चाहिए कि वो पहले बैटिंग के लिए जाएं, पुशेस टुवर्ड मिड ऑफ, एंड दैट्स लवली रनिंग, punches the air, and even the coach is happy. They are all praise for him, and what a lovely sight for the batter. Even we can see GG Gautam Gambhir, then Ajit Agarkar, and he takes off his helmet and acknowledges the praise and the applause by the crowd, and raises the bat. Here comes the skipper, shakes the hand, hugs him, and gives him pat on the back. Beautiful. 100 for Devdutt Padikkal. And the fans are cheering and roaring. They are dancing because it's Sri Lanka where you see a lot of fun happening. The people always, rejoice the game of cricket. They are ardent fans of the game of cricket, and they don't care who is winning, who is losing, because they love the game of cricket so much. So there is a century, and not that good ball. It was spinning all the way, pitched on the leg stump, and was turning away. And Gill lets it go to the keeper. That's the end of the over. 57 overs gone, 219 for one India. And David Padikkal is exactly on 100. Very well earned 100 by the gentleman. Very good 100, I think. Very, very well played. You know, his patience was tested in this game, and I think he has rose to the occasion. That's a very, very good 100. Back in September 2024, at number 3, Shubman Gill scored 100 against Bangladesh. So, in 19 tests between that game and the ongoing one, India used 7 different batters at one down, and they collectively averaged 27.28 with 550 plus scores in 35 innings. So, maiden test run for Devdutt Padikkal. I think what a marvelous moment for the gentleman, and I think he would be mighty pleased. Love you too, man. Prabhat Jasuria is bowling and nicely played towards mid wicket for a single. Very good running, I think, between the wicket. Shubman Gill and Padikkal, they are enjoying excellent calling between the wickets. I think overall अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं. Right. So Shubman Gill and Padikkal both are there with each other. Happy faces in the dressing room. Oh, what a lovely ball. Lovely ball by the spinner Kishara, and beats the outside edge of Prabhat Jasuria, beg your pardon. Shubman Gill is the batter. That was a flighted ball. Very nicely bowled. Just outside the off stump this time at wrong. Oh, the arm ball. The arm ball. Very watchfully played by Shubman Gill. I think he read it pretty well. Nicely read by him. Thank you. Very nicely read. Once again, Prabhat Surya with a slip and a forward short leg in place. Very nicely played. Waited for the ball to turn and played it towards our corner for a single. 2 to 1 for 1 are India. 58th over is in progress. Padikkal on 101. FM 101 याद आ जाता है 101 पे.
and Shubman Gill is on 7 of 16. Still asleep in place. थोड़ा सा डीप लिया है स्लिपर को एंड अब एक शॉट मिड विकेट पर फीडर आ गया इंटेंशनली क्योंकि अगर अब शॉट जाता है उसके लिए एंड एंड ऑफ द ओवर डॉट बॉल टू एंड 58 gone 2 to 1 for 1 India. So, कुल मिला के आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त गेम चल रहा है एंड आई थिंक मस्ट बी इंजॉइंग मस्ट बी हैविंग फन ओवर देयर बिकॉज इंडिया के बैटर्स ने जिस तरह से इस पिच को रीड किया आई थिंक इस ट्रिप को बहुत महारत के साथ आई थिंक क्रेडिट गोज टू राहुल एंड ऑफ कोर्स पेडिकल जिस तरह से इन्होंने हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर बहुत अच्छी पार्टनरशिप 150 रन की पार्टनरशिप इन्होंने बनाई देन ऑफ कोर्स unfortunately Rahul got the cramps issue, so he had to go back to the dressing room right after the tea break. So उसके बाद शुभमन गिल ने ज्वाइन किया है पैडिकल को और पैडिकल जो कि उस वक्त 84 रन पर खेल रहे थे अब उन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर कर ली है एंड आई थिंक ग्रेट मोमेंट फॉर द यंगस्टर क्योंकि सेंचुरी स्कोर करना वो भी मेडन सेंचुरी और वो भी ओवरसीज में it does show how gutsy you are and even skipper was all praise kept on giving him pat on the back and clapping for him so I think overall very good game and India have come out as champions in this game. Here comes Asita Fernando, very well bowled, in swinging delivery, and stride forward pushes it towards cover. Skipper Gill and finds the field over there. It's a dot ball. So I think श्रीलंका को कुछ अपने पेस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा पेसर्स को उस तरह के पेसर्स अब प्रोड्यूस नहीं कर रहा श्रीलंका भी अपन जैसे ही हो गया फारिग ही हो गया श्रीलंका could have done a lot better. अच्छे पेसर्स खिलाते शायद अच्छा बिग कंसर्न फॉर अस भाई बाबर आजम नॉट फिट एंड कुड मिस दिस फर्स्ट टेस्ट अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही ख़राब चीज़ हो जाएगी क्योंकि यस आई जस्ट डिस्कस्ड अबाउट इट बिकॉज बाबर को अनफॉर्चुनेटली बॉल लग गया and oh what a lovely shot what a lovely cover drive by Shubman Gill everything right about it so good on the eyes beautifully lunges forward and drives it handsomely towards cover. Even DTS was smiling. यार अच्छा shot मारा opposite number. A glorious shot. There to be hit. I think very bad ball. Width on the offer and he pounced on the opportunity. Very well played. Very well played. All along the ground. Beautiful shot. Everything right about it. Right from the mid of the bat, the sweetest part of the bat. Yesterday a ball जब बॉल लगाया उसने इंजरी का क्लियर कर दिया मैं पता नहीं मालूम नहीं कितना स्वेयर है because it's a major concern for Pakistan because if Babar Azam doesn't feature in the test on the 19th against England Pakistan will be in all sorts of trouble because Shan Masood का इंजरी चल रहा है then Abdullah Fazal पहले इंजर हुआ है we got Rizwan लेग साइड पे मारेगा 10-15 रन पर आउट हो जाएगा okay Shubman Gill is on 11 now that's well bowled bat and pad together. Well played. Not for our batting also who will be the captain. Leadership issue भी है. नहीं सलमान अली आगा को कैप्टन कर देंगे ना इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इज द वाइस सो द डेप्यूटी विल टेक ओवर द रेंज बट द प्रॉब्लम है सलमान खुद आउट ऑफ फॉर्म है या ओवरसीज में नहीं चल रहा फिर उसके बाद आपके पास शान मसूद जिसने एक सेंचुरी ठोकी वो है तो कुल मिला के आपके पास सिर्फ अब्दुल्ला फजल बचेगा इमामुल हक तो उनके लिए खेलेगा अपने लिए तो खेलेगा नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है अजान अवैस के ऊपर आप इतना डिपेंड नहीं कर सकते फिर कामरान गुलाम आपके पास है नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे आई थिंक yes so let's hope fingers crossed बाबर को खेलना चाहिए आई थिंक for Pakistan if they have to do well they need Babar obviously they need him particularly in the टेस्ट में तो वो अच्छा खेल सकता था आई थिंक हमें समहाउ मेरे ख्याल में थोड़ा कड़वा घूंट भरना पड़ेगा मेरे ख्याल में हमें गाजी गौरी को खिलाना चाहिए
उसको खिलाना चाहिए रिजवान. आई थिंक वी शुड नॉट कैरी ऑन विद रिजवान. बर्डन है टीम के ऊपर. 225 for 1 इंडिया. सवा 200 रन हो गए हैं. Asita Fernando bowling to Shubman Gill. Overpitch delivery, cover drive, handsomely played. What a lovely shot! Pierced the gap between cover and extra cover, and no fielder even moved because they knew that by the time it was hit from the mid of the bat, it was a boundary. It was written all over it. What a glorious shot! Beautiful shot. A rare overpitch delivery, a fuller length ball, and it was there to be hit or presented full face of the bat. What a glorious shot! And shows the signature Gill shot, Gill cover drive, and the sponsor's logo was clearly shown by Shubman Gill, and an opportunity for the photographers as well. Glorious shot, 229 for one. एक अच्छा बॉल एक बुरा बॉल अच्छा बॉल इन स्विंगिंग एंड pushes it watchfully towards mid off for a dot and 229 for 1 India 59 overs have been bowled out so एक जो अच्छी चीज़ हो गई है इंडिया के लिए कि शुभमन गिल जब से आए तो जो जो स्कोरिंग रेट है वो भी अच्छा हो गया so on one hand they are not losing the wickets and the other hand they are scoring at a very good run rate so ये I think बहुत hurt करेगा श्रीलंका की कॉज को बिकॉज आज जब 90 ओवर्स का खेल मुकम्मल होगा 90 ओवर 85 से तो ज़्यादा ही ओवर्स होंगे आज के दिन लेट्स सी अब कितने ओवर्स होते हैं मेरे ख्याल में स्पिनर्स ज़्यादा ऑपरेट करेंगे पेसर्स को शायद इतना मौका ना मिले क्योंकि 80 ओवर्स पर बॉल ने चेंज होना है एंड बॉल अच्छा भला स्पिन कर रहा था थोड़ा आई थिंक ट्रिक मिस किया इसने कप्तान ने धनंजय ने ही कुड हैव बोल्ड फॉर हिमसेल्फ खुद भी बॉलिंग के लिए आ सकते थे तो पैटिकल इन पर्टिकुलर सो प्रभात जसूरिया को लाया गया सो इसका मतलब आसिता को भी हटाया गया नाउ नो here comes Prabhat comes down the track and miss it but lucky ball comes towards deep mid on and a single for Padikkal. It's dancing down the track. Yeah, and once again, action replay of the cover drive hit by Shubman Gill. Down on his knee, and what a glorious shot by the skipper. Beautifully played. Wonderfully played, I think. Beautiful cover drive. And he was happy after hitting it. That's good. So here comes Tripath bowling to the skipper Gill. And Gill nicely leans forward and pushes it towards extra cover. And it's a dot ball. Gill is looking very confident because he has scored plenty of runs this year and backs out and cuts it towards extra cover. There is just a one fielder at point region, so ample space for taking a single. And Shubman Gill does the right thing by rotating the strike. I think प्रभात जसूरिया के against इनकी strategy है कि don't go for the boundaries and just rotate the strike, just place the ball in the gaps and scamper for a single. No wicket for Prabhat Jasuri as yet. 231 for 1 India. And they are in the driving seat right now. मोहसिन है अली मोहसिन है पापा को कॉल करके कह सकते हैं मैं लाइव करूँ 231 for 160th over is in progress and Prabhat Jasuria is operating well bowled very well bowled and equally well played by the batter played it with the soft hand intentionally towards mid on and there is a fielder. Now they have placed a fielder at short mid-on position. So this is for any uppish drive, any miss hit that goes in there. So smart field placement by the skipper DDS. This time the arm ball and very nicely guided towards third and a couple of runs for the batter Padikkal. He moves to 104. India 233 for 1. 60th over is in progress. So कुल मिला के I think India are dominating this test versus the host Sri Lanka and कुल मिला के अच्छा गेम चल रहा है I think बहुत ही अच्छा गेम चल रहा है This time was fully guided towards third for a single by Padikkal.
So India's score is 2-3-4 for 1. 60 overs have been bowled out. Padikkal is on 104. Gill is on 16. 20 overs, 60 runs at 3 and over. And Ireland and Afghanistan are also facing each other in the fifth and final ODI at Belfast. And Afghanistan have chosen to bowl first in this game. Lovely scenes here at Gaul, very near to the coast. Wonderful, wonderful. Beautiful, bright, sunny morning here at Gaul. 105 for Padikkal, 16 for Gill, 234 for 1. 60 was up in bowled here at Gaul. बात हुई है क्या क्या मतलब वो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद पिंडी लेके आएंगे यहीं पे अपना वसूल करो बात आगे तक चली या पैसे लगाएंगे अच्छा मैं भी करूँ so Asitha is now bowling round the wicket to Padikkal, 234 for 1 India, 61st over is in progress and lovely, lovely camera work, lovely camera work. I think it's a drone camera showing the coast and the ground as well. Very, very close by. Just on the brinks of the coast, lovely ground. Beautiful, beautiful, beautiful scenario. Beautiful scenes here at Gaul. Here comes the bowler Asitha, bowling to Padikkal, 105. Round the wicket he comes. Watchfully played toward cover. Another dot ball. 234 India for the loss of 1 wicket. Right. Signing off for now. Or